So once again we will meet another part of the direct speech and reported speech section. पुणी थरे आमे देखा करूछु डायरेक्ट स्पीच एवं रिपोर्टेड स्पीच रो सेक्शंस रे आमे ऑलरेडी दीटा क्लास रे आमे प्रेजेंट टेंस एवं पास्ट टेंस बाबद रे आलोचना करछु. तो आजिकार क्लास रे टुडेज क्लास रे आमे पुणी थरे आलोचना करिबा मॉडल सेक्शंस रो कथा. मींस आमे मॉडल भार केते गुडी को मॉडल भार कोन मॉडल भार गुडी को डायरेक्ट स्पीच रु रिपोर्टेड स्पीच को चेंज हुए आमे सेही गुडी को आमे वर्तमान पढिबा एवं जानिबा एवं सिखिबा. सो माय फ्रेंड्स, एज माय लास्ट क्लास जेमिति आपन को पास्ट टेंस रो कथा कहितली, गोटे पटे डायरेक्ट स्पीच एवं आ गोटे पटे रिपोर्टेड स्पीच रो कथा कहितली. तो ठीक सेही बडी कथा आजिकार क्लास रे मध्य ठीक सेही बडी कथा गोटे पटे मॉडल रो आमे डायरेक्ट स्पीच करिबा एवं आ गोटे पटे ठीक से बडा मॉडल रो आमे रिपोर्टेड स्पीच मध्य करिबा. सो प्रथमे आमे आलोचना करिबा काहा को आलोचना करिबा ना मॉडल भार्ब रे आमे समस्त जानिछु सेल एक मॉडल भार्ब. सो मॉडल जहार अर्थ गोटे आमे एक प्रकार कहि परिबा. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जदी हमर किछि बंधु माने जदी किछि स्टूडेंट्स बा ऑल माय वेल विशर्स माने जदी इफ यू नो आइडिया अबाउट द मॉडल, सो आई कैन गिव यू दैट शॉर्ट आइडिया दैट मॉडल इज एन ऑक्सिलरी वर्ब. यस, एटा समस्त जानि चंती एक सहाय्यकारी क्रिया, किंतु मॉडल इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मॉड्यूस. मॉडल टी आसीछि मॉड्यूस नामक एक लैटिन वर्ड रु MODUS मॉड्यूस रु आसीछि जहार अर्थ मोड बा मैनर. सो मोड अर्थ बा मैनर अर्थ बुझि परथिबे गुण बा वैशिष्ट्य. तेणु ये गुणवाचक एक क्रिया एक वैशिष्ट्य रूपक एक क्रिया. तेणु मॉडल इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मॉड्यूस which means to mod or manner. एवं हम इंग्रजी ग्रामर सेक्शंस रे that 13 modal verbs are there. केतेटी modal verb ना 13 टी modal verb हमर रहिछि. shall, should, can, could, may, might, will, would, shall, should, need, dare, must, just like this 13 टी हमर modal verb रहिछि. तो वर्तमान हमें ठीक से बड़ा कथा प्रथमे जो modal verb टी लिखिथिलु shall को लिखिथिलु. सो डायरेक्ट स्पीच रे जदी shall रहिला ताहला हमें रिपोर्टेड स्पीच रे हमें कोन करिबा ना should करिबा. Now shall converted to reported speech in should. Especially हमें example दे दबा ना कौन दे दबा ना देलु हमें कौन ना he said comma quotation आरंभ I shall go to market. So this is very easy sentence समस्त बुझी पारुथबे. तले he said comma quotation भितरे डायरेक्ट स्पीच को लिखा जाय छै I shall go to market. एवं एपट को चेंज हले आपण माने समस्त बुझी पारुथबे ना कोन हबो ना he said that I converted to he. I ता he हेइ गला एवं shall रु ए जगह रे लिखा है छी कोन लिखा है छी ना should लिखा है छी. तले he said that he should go to market. This is the end of the shall converted to should. केमिति के ताले shall रो एवं should को कन्वर्टेड हला आपण माने समस्त जानि परले. ठीक से बेले कथा shall परे जदि हमें लिखिबा will ताले will also changes to would. will मध्ये चेंज हे जिवो काहा को चेंज हे जिवो ना would को चेंज हे जिवो ना. ठीक very easy. I think this is a very remarkable and very remember moment that हमें भलो पाइबा दरकार पाठ को एवं से भलो पाइबार पाठ भीतर आपण देखंतु shall should होची will would होची. सो कंटिन्यूअसली मैनर रे वी डोंट टू फियर टू द स्पीच. आज पर्यंत बहुत स्टूडेंट्स माने फियर करंती डरी जानते अरे हबोनी डायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच रो कहानी भीतर. सो दिस इज वेरी जेन्युइनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट shall converted to should, will converted to would. ना एग्जांपल कोन दबा ना एग्जांपल देखिले कोन देखिले ना रानी told comma quotation आरंभ कोन लिखिबा ना लिखिले सीता will play football. Sita will play football, full stop and quotation says. So this is the direct speech manner. एवं एपट साइड को आपण माने आराम से बुझी परथबे जे रानी told that सीता will रु कन्वर्ट हे जिवो would play football. तो एति कि जिंस हमकु लिखिबार अछि एपट लिखि देबा कोन ना रानी told that सीता would play football. So this is the very easy and interesting way to understand that will ru would hela
तो ठीक से बळे कथा मो पिला माने आमे गोटे पटे मे लिखिबा एवं मे चेंजेस टू माइट मे रु कोन हेइ जाय ना माइट हेइ जाय आमे लिखिबा ना गोटे नुवा नाटी लिखिबा आमे लिखिबा बैन सो इट्स एन इंग्लिश नेम बैन सो बैन said comma quotation says it may rain so this is very simple sentence there is use of the may modal verb मु ए जगह may modal verb को यूज करछि आपण माने जानि पाउथबे तो एपट साइड को हमें लिखि परिबा कोन लिखि परिबा ना Ben said that it may रुहे गला कोन ना might एवं एपट हे गला rain so it may rain it might rain this is the basic changeability of the may to might ठीक से बड़े कथा जदि हमें पुणी आसीबा से बड़ा हमें can को आसीबा and can changes to my friends that could so can ru could ना केमिति का ना सपोज लिखिले गोपाल ask can to could means गोपाल ask comma quotation आरंभ होला तो हमें गोटे लिखिलु कोन ना लिखिलु he can dance with his friends full stop quotation says tal Gopal asked he can dance with his friends tal epoto side ku jodi ame lekhiba tale kon lekhiba na Gopal asked that he can change he kon he gala na could he could dance with his friends so this is the simple way to understand that can converted to could may converted to might will converted to would and shall converted to should तो ठीक सही भली ढंगरे आउ किछि मध्ये मॉडल भार रहिछि जेमिति का हमें कहि परिबु सपोज मु एठी आपण मानन टिके मेंशन करबी जेमिति का कैन रो कथा लिखिलु हमें ठीक से बळे कथा लास्ट लिखि परिबा मोस्ट आपण माने सुनिथिबे मोस्ट रो कथा सो मोस्ट चेंजेस टू हेड टू so these are the modal verb not had to is the modal verb suppose हम एई जगह रे गोटे वाक्य लिखिबा ना कोन लिखिबा ना he said comma quotation आरंभ I must kill you full stop and quotation says एपट साइड को जदी हमें चेंज करिबा ताहले लिखिले हमें कोन कहि परिबा ना he said that I changes to he परे हे गला had to kill you so must changes to had to these are the simple way to understand the modal section एतिकी modal verb गुडी को बा एतिकी modal section को आमे कन्वर्टेड करि परिबा डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच means shall will may can must shall to should will ru would and may ru might and can ru could and must ru had to so these are the basic needs to understand the direct speech and reported speech section ये होची साधारण भाव रे जो बुझिबा आवश्यकता मुताबिक हमें डायरेक्ट स्पीच रो रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्टेड करा जाय एंड एहा बाद आउ किछि मध्ये एग्जांपल्स गुडी कर रहिछि बाद बाकी जदि हमें मने पकैबा सपोज हमर किछि ट्रुथ सेंटेंस को हमें कहिबा सपोज ट्रुथ इज बेसिकली इज दैट थ्री टाइप्स ऑफ द कैटेगोरिकली डिवाइडेड इनटू थ्री हम ट्रुथ कहिबा ना कोन ना हम कहबा इटरनल ट्रुथ मैथमेटिकल ट्रुथ साइंटिफिकल ट्रुथ जदि कोनोसी एक वाक्यटी सत्य कथा ऊपर आधारित अछि मींस सेटा एक चिरंतन सत्य होई पारे बा गाणितिक सत्य होई पारे बा विज्ञान सम्मत सत्य होई पारे जदि ट्रुथ रो कथा को जदि बुझाय ताले ऑलवेज बी इट इज प्रेजेंट सिंपल एहा आउ कौन सी जगह को जाई परिबो नाही इट ऑलवेज बी इन कांस्टेंट इन प्रेजेंट सिंपल एवं आपण मानन को जते बेले कहिथिबि जे प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल दिस इज ओके नो प्रॉब्लम ऑल द सेंटेंसेस कैन बी चेंज्ड इनटू द प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल बट एक्सेप्शन इज द
ट्रुथ केसेस जदि से वाक्यटी सत्य जदि सेटा से साधारण सत्य हो चिरंतन सत्य हो गाणितिक सत्य हो कि विज्ञान सम्मत सत्य हो जदि सत्य कथा ऊपर जदि रहिथिबो ताले जो प्रेजेंट सिंपल अछि सही प्रेजेंट सिंपल हे रहिबो ताहा कोनोसी परिवर्तन हबो नाही सो ऑल थिंग्स अबाउट द डायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू एंजॉय थैंक यू वेरी मच